Hi viewers, you are watching English Hut and today we are with the second video of our English spoken course. हमने इंग्लिश को स्पोकन कोर्स स्टार्ट किया है और आज दूसरा दिन है। लेसन नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे सेंटेंसेस और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शंस और प्रोनाउंसिएशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सम सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को आपने मेमोराइज कर लेना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है अपनी डेली स्पोकन में। सो फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, वाई डू यू लुक अपसेट। वाई डू यू लुक अपसेट। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आप परेशान नज़र आ रहे हैं तो आप कहेंगे वाई डू यू लुक अपसेट। शी विल बी सून हियर। शी विल बी सून हियर। वो जल्द ही यहाँ होगी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप बोल सकते हैं, योर गिफ्ट इज़ प्रेशस। योर गिफ्ट इज़ प्रेशस। आपका तोहफा बहुत कीमती है। दिस वर्ड इज़ प्रेशस नॉट प्रीशियस। ओके, इसको आप प्रीशियस अगर पढ़ेंगे दैट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट इज, वो मुझे नारजामंद लगता है, मीन्स कि वो किसी बात पर ज़िद कर रहा है। ही सीम्स टू मी रिलक्टेंट। ही सीम्स टू मी रिलक्टेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अली एक अहमक है। अली इज़ जस्ट अ गूस। अली इज़ जस्ट अ गूस। ही इज़ मैनिपुलेटिंग नाउ। वो बहाने बना रहा है। वो अब बहाने बना रहा है। मैनिपुलेटर मीन जब आप टाल मटोल करें, दैट इज़ नोन एज मैनिपुलेशन। रिमाइंड मी लेटर। रिमाइंड मी लेटर मीन मुझे बाद में याद करवाना। रिमेंबर इट, इसको याद रखो। नाउ वन थिंग इज टू पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट रिमाइंड मीन होता है किसी को याद करवाना और रिमेंबर मीन होता है खुद याद रखना। सो दिस इज द डिफरेंस इन बोथ। डोंट डिस्क्लोज टू एवरीवन। डोंट डिस्क्लोज टू एवरीवन। इस राज को सब पे मत खोलो। डिस्क्लोज मीन होता है राज को अफशा करना। Another sentence is report it at once. मुझे फौरी बताओ या मुझे फौरी इसके बारे में रिपोर्ट करो। क्या मैं जाऊं? इसका इंग्लिश में आप कहेंगे shall I go now? Shall I go now? ये बेकार कोशिश है। In English you would say it's a wild goose chase. It's a wild goose chase. बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। Leave the rest on me. Leave the rest on me. Contractions. So next हम जा रहे हैं देखने के what is contractions. Let me tell you what is contraction. Contraction is when you speak the word in spoken language. You contract some word. Means कुछ words को आप तेज़ी में या जल्दी जल्दी में मिलाकर बोल देते हैं. So that is known contraction in English. What are the some contraction in English? Now let's learn. फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे आपको जो नज़र आ रही हैं वो है इट्स, हिज, हिट, आइट, एम। इनको प्रोनाउंस कैसे करना है और इनको किस किस सूरत में कैसे यूज़ किया जाता है, लेट्स सी। फर्स्ट है हमारे पास इट्स। सो ये शॉर्ट फॉर्म है और कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ की। इट इज़ को जब आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके तो इसको आप कहते हैं इट्स। Next is he is or he has. Both has the same contraction, that is his. Question arises कि आपको कैसे पता चलेगा कि he has है या he is है? तो contextual meaning tell you means किसी भी sentence में जब ये use होगा या आप बोलेंगे तो context बताएगा कि ये he is है या he has है. After that we had he would और he had और he would के लिए भी एक ही तरह की कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज हेड। इसको आप प्रोनाउंस करेंगे हेड। लाइकवाइज आई वुड और आई हैड की प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन है आइड। आई एम की कॉन्ट्रैक्शन है आई एम। नेक्स्ट इज आई विल की कॉन्ट्रैक्शन में आप बोलेंगे आयल। व्हाट इज आयल? एंड विल नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट करके आप बोलेंगे तो आई वी विल से वांट। व्हाट इज वांट?
कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बोला जाएगा can't, can't. एंड कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बोलेंगे couldn't. What is couldn't? Has not, hasn't. Do not, don't, don't. नेक्स्ट गोइंग टू को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कहते हैं gonna. लाइक यू वांट टू से आई एम गोइंग टू स्कूल, यू विल से I'm gonna school, I'm gonna school. I want to pick it up, I want to pick it up. आप इसको बोलेंगे I wanna pick it up, I wanna pick it up. So want to की शॉर्ट फॉर्म में wanna. got to, I got to go now, मुझे अब जाना है, I got to go now. You will say I gotta go now, I gotta go now. I have को आप बोलेंगे I've. Let us, इसको आप बोलेंगे let's. So these were the contraction. I hope so each and everything is clear. If you still have any question you can ask. प्रोनाउंसिएशन हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, तो प्रोनाउंसिएशन भी आपकी स्पोकन में वन ऑफ द बेसिक थिंग दैट यू आर टू कवर. So the first word we have of the pronunciation, that is government. Keep the one thing in your mind, R is completely silent in this, government. This is not government or government, this is government. And another word is determine. Determine. R is silent and mine is not mine. You cannot say determine. This is determine. Determine. After that, this is hint. No, this is not hint. This is hint. Mostly people say is hint, or the modern English is all, or modern English people or Indian people or Pakistani are still using it as hint, but that right original pronunciation is hind. Hind means पिछला हिस्सा, or hind is also used for the female of deer, mean हिरनी को भी आप hind बोलते हैं. Okay, the most commonly wrong pronounced word, anxiety and anxious. Anxiety mean parishani, and its pronunciation will be anxiety. And anxious, this is not anxious as the most people say, this is anxious. Oh, so anxious mean pareshan kun, anxiety mean pareshani. Okay, and this word I'm 100% sure that you are pronouncing it always wrong. This word is iron. That is iron. And mostly people say it iron. Mean you pronounce R. That is totally wrong. Iron. That is iron. And the next steak. Steak? No, this is not steak. This is steak. What is steak? गोश्त का टुकड़ा या कतले को आप कहते हैं steak. And the last but not least, this word is vineyard. What is vineyard? इसे आप vineyard या vineyard बोल सकते हैं, लेकिन that is not vineyard. Okay, the right pronunciation is vineyard or vineyard. Comb, that is comb. This is not comb, means B is totally silent at the end. That is comb. Comb. Elite, that is elite. This is not elite. अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको कहेंगे elite. So I hope so these words, pronunciation, contractions and sentences were helpful for you. So guideline for you is here, that memorize these sentences, contractions, and after that pronunciation on the daily basis. For watching more videos and the next lesson of the same English spoken course, you should subscribe this channel. See you next, inshallah.